एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। मैं लिटरली मैं थोड़ा कांप रही हूँ वेरी नर्वस। हाँ, प्रैक्टिस छूट जाती है ना रेड कार्पेट पे। लेग ऐसे होगा कि वैसे होगा, पोज भूल जाते हैं। इट हैपेंस टू एक्टर्स अ लॉट। Did I tell you all that? No, maybe you all wanted to see me on web platform. You all said that. No, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं। मुझे अवार्ड फंक्शंस में हमेशा मज़ा आता है बिकॉज इट्स सो ग्लैमरस एंड यू नो रेड कार्पेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखते हैं, एंजॉय करेंगे, सभी लोग हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट रहेगा। एंड आपका वेब प्लेटफॉर्म भी होगा। अभी टू अर्ली टू टॉक, तो वो कुछ कंक्रीट हो तो फिर बताऊंगी आई स्पीक फॉर पीपल जो सही तरीके से लेते हैं। अब जो गलत है उनके ऊपर क्या मैं बोलूँ। अब तो किसी भी चीज़ दुनिया में आप उसको सही तरीके से कर सकते हो, गलत तरीके से कर सकते हो। अब सबके ऊपर मुझे अगर कमेंट करना है तो मैं क्लियर रखती हूँ। मैं अपने फोकस को क्लियर रखती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या फोकस करना है, बाकी दुनिया का आप लोग देख लो We will talk about that later. I am continuing the fight. I will take it to justice. Victory will be mine, and the world will watch. ये मेरी जो ड्रेस है, मैं इन्हें यूएस से ये ली थी, and I'm wearing it today on the red carpet. And this is a very general dress. It's a very normal dress, but I'm making it special on the red carpet. Thank you. Thank you. Tanushree done? Have you done? Yeah. हाँ मैं आ रही हूँ। आ रहे हो? So then I've been missing. हाँ, you've been missing. We'll catch up soon. हाँ. बहुत लाइन है। जल्दी हाँ, कुछ पूछना है? नहीं आएगा। आई एम गेटिंग एन अवार्ड, जल्दी हाँ बोल दो। That's the best question. I am totally excited. I'm going winning an award right now. तो मैं जा रहा हूँ बस, मैं चले जाऊँगा। नहीं, I'm presenting an award. But अगर मेरा बस चले तो I'll give Karan Sharma for the best looking guy in the industry, digital and film and TV, and he's a TikTok star. मेरा बस चले तो मैं और Terence sir cannot be waiting. Please, sir. What are you doing? I'm so sorry. I'm eating out of your time, man. Not at all. And how sexy are you looking? What's up? Old. I love the salt and pepper. Yeah. So we'll take your leave. We'll go inside. We can harass him more now. Oh, you want to ask us also something? Well, प्रतिक्रिया ये है कि अच्छा ही है, बिकॉज आज डिजिटल का ज़माना है, OTT प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है, और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ने अपने पहली बात तो प्रतिक्रिया वर्ड सर ने बोला है, उसी के लिए एक अवार्ड मिलना चाहिए। शुद्ध हिंदी, हर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होना ज़रूरी है, तो ये मुलाजमी है। तो आई वुड जस्ट से इट्स परफेक्ट, इट्स करेक्ट। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिनको प्लेटफॉर्म पहले कभी नहीं मिलता था, उनको अभी मिल रहा है। They are self-creating their own identity and their own persona. So I think it's amazing. This is the next generation. It's the next wave. Done? Yeah. Super. Same here. Thank you.
करिश्मा हेलो हाँ करिश्मा बोलो I'm really excited to be nominated for my first ever web series, Hangama, and I'm more excited because my producer turned director is going to be here, and we're really looking forward to taking this award home. So yeah. I think every medium, be it films, television, or any OTT platform, I think it's great to have any medium where storytellers can tell their story, and you have great subjects where there are no inhibitions, and where I think as a maker or as an artist you could experiment a lot, and I think OTT platforms are really a boon to all of them. So yeah, I'm really glad that these awards are happening, because I think anything that encourages new talent and kind of I think कहीं ना कहीं हम सबको अच्छा लगता है कि nomination है, award है, so it's really nice. I don't think there's any difference. I think जो भी एक thin line का difference था वो भी निकल चुका है, and I think everybody is working everywhere, and that is how it should be. I think no platform or no medium or no language should kind of bind or bound you to not to work in the other thing. No, not really. No. हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे चोरी छुपे वो देखना पड़ता है. So that's the thing. Yes, well, Rashmi is a friend, and मैंने से सुना है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, and she's a very strong woman, as if as far as I've known her, and I really wish her all the best. Yeah, thank you. आप बहुत फॉलो करते हैं ना, मैं नहीं इतना फॉलो करती हूँ. सॉरी. ओके. I don't know. Yeah, I know her as a friend. I'm so sorry. You can give the thing to somebody else. And then पहले तो बहुत शोर हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन भी ऐसे उड़ उड़ के आ रहा है, बट येस, आज की इवनिंग बहुत अच्छी लग रही है, एंड निशा इज गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग एन अवार्ड, and today I'm accompanying her, so that's very nice. this is the first time we've come to an MTV red carpet, so that Yeah. itself makes it so exciting. We're presenting an award. Yeah, presenting an award. Well, of course, it's a new era of digital platforms that are coming in, and so many new opportunities for people to explore. And more than me, she's very digitally inclined, so she should be answering this, I think. Well, I'm very passionate about my digital properties. Instagram is my favorite platform to be on. And I think obviously times have changed, and it only makes sense that we have a digital award tonight. And what better platform than MTV? So just want to wish everybody all the best. You're seeing us on Instagram at the moment. So we are doing things together. Yes. Things are in pipeline. I wouldn't like to say anything right now, but we are going for something. We're shooting for something in just 2 days, so that should be out maybe next month. And at the moment, 2.5 Mehras is what we call ourselves, and we do a lot of social causes. Yeah, that's what we do. Recently, we did the beach cleanup, so that is something that you must have seen on again, on our Instagram pages. So 2.5 Mehras meaning, of course, me, Karan, and Kavish. So trying to use the digital media also in a positive way as Yes. well.
I think it's a great platform to influence people. So being a responsible influencer makes a huge difference. Honestly, we don't follow Big Boss, so we've not been watching it much. But now that our friend Shefali has gone in, Yeah, that's we the do only catch time. some glimpses Yeah. of it, but not really like ardently following it. Yes. So we haven't seen them as players, as contestants on Big Boss, so we don't know how they are. We've not seen that side of them. But yes, Shefali is a dear friend, so I'm going to be partial and I'm going to say that I hope she wins. Thank you. Always love seeing the digital space grow. So it's great that we have awards now in the digital space. Nothing like IWM to represent those awards. Youth Influencer of the Year. So let's see. It'll be a fun night either way. Okay, thanks. It's a beautiful story of great human endeavor. So first of all, उस story का part बनना was a very big deal for me. And I got to work alongside such amazing people. I got to be on board with Alt Balaji all over again, and Ekta, as nice as she was so trustworthy with the role. And then on top of that, to be nominated for something like that, you feel really blessed. So I'm very happy. मुझे ज़्यादातर तो यही कॉम्प्लीमेंट मिला है दैट वी कुड नेवर सी यू लाइक दैट एंड यू नो इतनी सीधी और एकदम सिंपल लड़की एंड ऑल ऑफ दैट ऑल्दो आई एम क्वाइट सिंपल बट आई एम नॉट एज innocent as her maybe, or I'm not as naive as her, and on top of that she's a mathematician, and maths is not really my strong suit. हाँ, और मुझसे बिल्कुल रियल लाइफ में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है. सो आई थिंक पीपल जस्ट हैड अ गुड टाइम वॉचिंग मी. I just feel really grateful and very privileged to be a part of such a coveted nomination list. You know, जो fellow nominees हैं, they are so brilliant, and I'm I just feel very grateful. Thank you. Are we saying anything or not? को समझ में आ जाएगा कि the reach is unbelievable. Whether it's Instagram, whether it's Twitter, whether it's TikTok or any of these mediums, इसकी reach ही अलग है. We're just happy to be a part of the future. I think Yeah. we're still not accepting in our country कि ये I think bigger than Bollywood हो गया है अभी, and the digital is the way forward. So whoever is actually taking time out and awarding them is awarding the future. So thank you. Actually, and we are thank you giving for an having award. us. Yeah, I know. We're giving Yeah, an we're award. giving an award, so very happy. नहीं हमें खुद नहीं दे रहा कोई, हम लोग दे रहे किसी को. अभी तक हमारा वो लेवल नहीं आया कि हमें कोई देगा डिजिटल. शायद थोड़ी देर बाद होगा वो. ऐसे. वो आज भी इतना पॉपुलर है. So I think it's a very different zone. Public क्या पसंद करती है, one doesn't know यार. मेरा दोस्त तहसीन अंदर था, वो तो पता नहीं 2-4 दिन के लिए पुणे वाला. हाँ, बट मुझे लगा Came to say hi, bye. मैंने सुना बहुत हाई अमाउंट के साथ अंदर गए थे, जैसे ही वापस आ गए वापस बाहर आ गए. हु इज द न्यूएस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट अभी? उनको मैंने बस जिम में देखा है.
नो सो आई डोंट नो हिम पर्सनली ऑल्सो, बट आई थिंक जिस तरह वो है उसको तो उसका पर्सनैलिटी देख कर ही लोग फाइट करने वाले हैं. तो आई थिंक अभी वो डालेंगे, थोड़ा मसाला तो चाहिए. अगर नॉर्मली सिंपल रोटी बना रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, कोई देखने नहीं वाला. वैसे भी रेसलिंग के सबसे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे कुश्ती शुरू होने वाली है. Cheers, thank you guys. Light would affect you? Yeah? I'm very excited because whenever it comes to IWM, Buzz, and with MTV, because MTV made me India's Next Top Model, so I'm always there to support MTV and IWM Buzz, of course. No. So Ace of Space 2 की बात करें तो definitely Ace of Space 2 was way more easier than Ace of Space 1 because हमको तो कमरे में बंद करके रखते थे, इन लोग को तो चिल जोन में भी आने देते थे और हमारा था 2 दिन में एक बार टास्क होता था तब हम एक्टिविटी एरिया में आते थे. तो ऑफ कोर्स Ace of Space 2 was way more easier than Ace of Space 1, and my favorite was Basir and Shruti. I know them before also, बट बसीर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया. सो या लास्ट में सलमान वॉज वेरी डाउन, वो कुछ करते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो आई फील कि लास्ट में उनका जर्नी काफ़ी ठंडा हो चुका था. तो मेरे हिसाब से श्रुति, बसीर और रश्मि झा उनको विनर होना चाहिए था. Big boss, big boss. Thank you so much. Sorry? Yes. फ़िलहाल फेवरेट तो है शिफाली जरीवाल, और भाऊ मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ भाऊ जैसे एंटरटेन करते हैं. आई जस्ट लव हिम, आई लव हिम. थैंक यू सो मच. Hello. Who's there? Okay. Yeah. And today, these days, it's not just films and it's digital, and there's so much good content which is being put out there, and I think as an audience, I really enjoy watching a lot of web shows. What next? I'll be telling you very soon, but thank you so much for the compliment. Yes, it's a very, a very overwhelming feeling when you get a good हाय सर, हाउ आर यू सर? आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है बताइए. मैं नहीं बताऊंगी, टॉप सीक्रेट. थैंक यू सो मच, थैंक यू. यार ये तो हमारा अवार्ड है ना, बिकॉज सारे लोग हमें आजकल वो क्या कहते हैं बॉक्सेस में डालने लगे हैं. तो इफ़ यू आर अ डिजिटल स्टार देन इट्स आवर नाइट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुनाइट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई एम नॉमिनेटेड फॉर सीक्रेट गेम्स अगेन. तो देखते हैं क्या होता है. Very proud. In fact, I'm really excited because we're also nominated for the Emmys International, and I'm looking forward to be representing our crew in New York, and it's going to be. मुझे तो लग रहा है हम अवार्ड लेके आए. नहीं यार, I think digital is the present.
तो जितना कंटेंट हमें आज अपने फ़ोन्स पे आते जाते विथ मोबिलिटी देखने को मिल रहा है, राइट, दैट्स द प्रेजेंट। फिल्म्स को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आई मीन आज भी हम थिएटर जाते हैं, प्लेस देखते हैं, म्यूजिकल्स देखते हैं, कॉन्सर्ट्स देखते हैं, तो मूवीज़ आने की वजह से कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है, इन्हेंस हो गया है। तो फिल्म्स भी इन्हेंस हो जाएंगी डिजिटली, और ज़्यादा बड़े पर्दे पर देखने का एक अलग ही मज़ा आएगा। सो आई गेस इट्स जस्ट अबाउट दैट, बट वेब इज़ हियर टू स्टे। इट्स द प्रेजेंट, इट्स द नाउ। No, I don't have the time to. I don't watch any reality shows because I think हमारी ज़िंदगी एक रियलिटी शो बन गई है। आप देखो, इंस्टाग्राम खोलो, आप अपनी कहानियाँ डाल रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप खुद अपनी कैद में हो और आप अपने घर में हो और आप अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हो दुनिया के साथ। सो आई थिंक वी आर ऑल लिविंग इन अ रियलिटी वर्ल्ड, अ रियलिटी नॉन TV वर्ल्ड, बट इट्स अ शो। सो थैंक यू ऑलवेज, यार, थैंक यू, बाय गाइस, सी। Thank you so much. Very excited because I haven't dressed up for a really long time. So tonight I feel actually pretty and clean because I've been very busy with my rehearsal. So I haven't really gone anywhere for a really long time. So I'm very excited to be here. Yes. I think digital platform is something so new, and India is right now picking up in OTB platforms, and digital marketing is such an important part of our life, which is from showing your talent, raising the opinion that you have about different things, and also talking about things that you like, addressing issues of the society, and having a voice and having an opinion. And I think it's such a great time that you can actually talk about a lot of things on social media, on digital marketing. And as far as me is concerned, I love the digital platform because sometimes you're not going to be able to show exactly what you're doing or what's your opinion. So it's a great platform to be part of it. Yeah. Yes. I think I'm presenting a award to some really cool people that they've done some really cool stuff, and I can't wait to meet them. Yeah. Yes. Yes. Unfortunately, I'm not watching this season. I haven't managed to watch any of the episode, but I hope everyone is having fun and everyone is being true to their followers and fans and playing a really nice and clean game. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, guys. Yes, thank you. Thank you.
Really looking forward to watching the show. Yeah, I think it's great क्योंकि इतना सारा कंटेंट और वैरायटी मिल रही है सबको देखने के लिए. All kinds of shows are coming up and actors are getting a lot of great stuff, experimental stuff to work on. So that's great. Thank you. We have to support him and very excited for the show. जी. जी. Yeah, of course, I am completely open to the digital platform. Obviously, it's the place to be right now, actually. So I'm very excited. Oh, I've heard the censorship thing is happening now. So, why? I mean, डिजिटल है, करने दो ना अब यार. एक पोर्टल है जब फ्रीली बात कर सकते हैं, करने दो बात. उसको भी सेंसर कर देंगे. अब घर पे आके बोलेंगे भाई ऐसे बात मत करो. I hope that won't offend anyone. Huh? An action. That's all I can say right now. It's an action film. No. It'll go into production very soon. So we should announce it in a month or so, month and a half, hopefully. Yeah, if all goes well. Thank you, buddy. Thank you very much. Thank you. As a consumer, I think tonight. Well, I'm going to see. I just presented an award, and I'm also here with my friend Nidhi Singh, who is a very, very well-renowned web actor, and she's nominated for a category. So I'm just going to have fun, and I hope that this encourages more and more content on OTT. We're all consumers, even the people who are getting awards, and all the best to everybody, I hope. I think different people hold awards to different standards. Some people don't care, some people do, and some people live for achieving certain awards. And I think we live in a digital world, so this is the beginning of many. And I'm sure it encourages actors and it gives people the confidence to put out more and more content and keep doing the awesome work that they're doing. Thank you. Thank you. Just finish it now, no? Yeah, it's really nice that digital is taking over in a big way. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्म केक वॉक has been nominated as the most popular film. So I'm here for that today, and I wish everyone all the best, and I'm looking forward to the awards. I think most of us are, it's very convenient, तो मैं मेरे घर में काफ़ी लोग digital is the way, I think, of the future. So we enjoy watching a lot of digital. I just got the offer of Cakewalk, and it was really nice that Raj Nayak took the film, and it released on Voot and on Rishte Cineplex. Yes, there is one in the pipeline called Ek Dua, which will be announcing soon. Yeah, thanks.
course, I'm super excited. I'm dressed all glammed up. So yeah, this is my first award show ever. So I'm super excited for it. I'm looking forward to have a great fun night. Yeah. बहुत ज़्यादा. I've been blessed and I'm really lucky and grateful कि I've done 4 series right now and Ishq Aajkal अभी बंद हो गया है. This was the last season which released on 31st of October. I'm glad, yeah, I'm blessed and I enjoyed it. I never expected that I'll be doing back-to-back every month. Each season will release, but yeah, once that was done, I was super excited and happy for it. Yeah. Unfortunately, I'm not following it every day, but I've watched few episodes. जो मेरे को कुछ fans ने कहा था कि मैम सिद्धार्थ शुक्ला ने ये किया, आज उनके साथ ये हुआ. तो I was very curious to see that, and I've seen it, and I'm really supporting Siddharth Shukla. I think वो बहुत misunderstood है, and लोग उनके बारे में एक preconceived notion लेके आए, तो वो बेकार में target हो रहे हैं. I'm really supporting him as of now. Yeah, my favorite. My current vote will go for him. Yeah. Wild card entries, I think only one Bhav, Hindustani Bhav is really famous, and I like his Sanju Baba style. So yeah, he's doing good, he's chilled out person, but my personal favorite will be Siddharth Shukla as of now. Yeah, welcome. No questions? Awesome. Bites, you can go from here. After giving bites, you can go from here. क्या बाइट देनी है मुझे? Yeah, it's the first time I'm attending the awards, so I think it's the first thing always a little more exciting. I want to wish all the actors or technicians who are nominated here all the best, and hopefully we'll also get some attention there. To answer this, I have just only one thing, that I am doing 3 shows on digital platforms, so that gives the answer, I think. I'm not following Big Boss at all. I didn't get time to watch it, but yeah, hearing good stuff about it. It's the best season or something like that. So it's good. Thank you. अभी इधर? अभी किधर? We're doing bites. बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे भी अवार्ड्स फाइनली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. अयान बोल रहे हैं मेरी हाइट नहीं आने वाली. और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज आई थिंक ये पहला ऐसा अवार्ड शो है जिसको मैं अटेंड कर रही हूँ जो कि बेसिकली डिजिटल पर है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है और इसके लिए एक प्रॉपर अवार्ड फंक्शन है आज. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड इट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. या आई एम
nominated in the most popular social media star, but let's see if I win it or not. फैंस इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं इसीलिए रोज़ अपने अपडेट्स उनको सोशल मीडिया पर देती हूँ और टीवी पे अभी इसीलिए मैं नहीं आ रही हूँ, बट MTV पर आने वाला है ये अवार्ड्स, तो जो मिस कर रहे हैं टीवी पे वो देख सकते हैं. Thank you so much. So I'm wearing the sequenced gown, which is sequenced half, ऊपर से नहीं, and black is all time favorite. You know, I don't even remember मैंने कितनी बार functions में black पहने और repeat किया है. I'm not experimenting with colors any day soon. And that's it. Just very minimal jewelry. And as you can see, Ayan is what? Ayan is wearing this formal thing which he doesn't like. Yeah, which he doesn't like. That's मैं एक्चुअली नॉमिनेटेड नहीं हूँ, सो अगर होता मैं तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता, बिकॉज मुझे आप लोग के ऊपर भरोसा है. अगर मैं नॉमिनेटेड होता तो मुझे बहुत सारे वोट्स मिलते, ज़रूर मुझे अवार्ड दिलाते, लेकिन इस बार हूँ नहीं. मैं बस ये विश कर रहा हूँ कि अप्पी नॉमिनेटेड है तो अप्पी को मिले अवार्ड ज़रूर. लेट्स सी. थैंक यू. आज फुल मून है, बाय द वे. आज गुरुपुरब है. आज बहुत खूबसूरत दिन है. मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन मुझे काफिर के लिए नॉमिनेट किया गया और मैं यहाँ आ पाई, क्योंकि उस कहानी की जो सोच है, जो नोबिलिटी है, जो प्यार है, जो समझ है, वो आज के दिन बहुत खूबसूरती से झलकती है. और ZEE5 ने इस कहानी को लोगों तक पहुंचाया. सिद्धार्थ मल्होत्रा और सपना मल्होत्रा ने ये कहानी बोलने का यकीन रखा, हौसला दिखाया. ये कहानी लिखी गई थी 14 साल पहले भवानी अय्यर से, और आज मेरा मानना यही है कि इस पे काम करने के बाद कि द यूनिवर्स's टाइमिंग इज़ ऑलवेज परफेक्ट. कहानियाँ हमें चुनती है, हम कहानियों को नहीं चुनते. लोग हमें चुनते हैं, हम लोगों को नहीं चुनते. और सच हमेशा जीतता है और प्यार हमेशा जीतता है. और यही गुरुपुरब का यकीन है. Humanity is my religion is the theme of the show. So I don't think we could have chosen a better day to celebrate that. And I hope and I believe that whoever has watched and witnessed this truth, this story, has felt it deep in their hearts, just as much as the entire team has. Just as much as Dishita, the little child, did, just as much as Mohit Raina, my co-actor, did. Every single artist on that show, the director, the cinematographer, every technician, the costume design team, everyone found resonance in this truth, and they believed in it, and they trusted it, and they loved it, and you can see it on screen. And I'm so proud of it, and I'm so proud of the editor who stitched it together.
Is there news that there is a second part going to be shot? I don't know. We'll find out. I mean, if it's meant to happen, it'll happen. Thank you. Bye. Oh, and by the way, guys, I have to share this with you. It's so lovely. Come here. This is my mother. She's running away. She's very shy. Okay. It's her birthday month. And I think this nomination is a big gift for her. So, this one's for you. Huh? Oh, visual. या काफ़ी काम रहा है पिछले एक साल में एंड या IWM को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम एंड सिद्धार्थ एंड द एंटायर टीम ऑफ IWM सो या आई एम वेरी एक्साइटेड अभी बस 27 को ही है देखते हैं क्या होता है लेट्स सी हाउ इट गोज आई थिंक आई सी इट एज अ बून यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की and it's a platform where you can express yourself and you know it reaches out to the world without any edits, without any censorship, and I think it's a great place where you know everyone gets an opportunity to showcase what they have. बहुत अच्छा लगा शूट ख़त्म हो चुकी रिलीज़ करीब है एंड 2 महीने में रिलीज़ है आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड साइमल्टेनियसली साथ ही साथ में आई एम शूटिंग फॉर समथिंग एंड तो आई थिंक एज वी गेट क्लोजर टू द शूट आई थिंक थोड़ा ध्यान वहाँ जाएगा बट राइट नाउ या सो दैट्स हाउ इट इज़ इट वॉज ग्रेट शी एज आई ऑलवेज सेड दैट शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड को एक्टर्स आई वर्क विद थैंक यू सो मच गाइज
आजकल सब लोग, आप भी जानते हो, सब लोग ज़्यादा करके अपना एंटरटेनमेंट फ़ोन पर ही देख रहे हैं. तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल न्यू ओपनिंग फॉर ऑल आर्टिस्ट. इफ इट्स अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, एडिटर, उनका काम, आप उनको बहुत टाइम मिलता है अपनी कहानियाँ बताने के लिए. सेंसरशिप की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रेशर नहीं होती है बॉक्स ऑफिस की. तो जो एंटरटेनमेंट है उसका जो कोशेंट है, जो राइटिंग है, जो जिस तरीके से आप शोज़ बना रहे हैं, इट्स रियली द क्वालिटी इज़ रियली गॉन अप. उसका बार बहुत रेज हो गया. सो इट डेफिनेटली डिजर्व्स एन अवार्ड फंक्शन एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर. मेरी फेवरेट सीरीज़ रिसेंट टाइम्स में एक अंग्रेज़ी सीरीज़ है जिसका नाम है सक्सेशन. वो हॉटस्टार पर आती है. आई हैव जस्ट डन फाइनल कॉल एंड होपफुली दे विल डू अ फाइनल कॉल टू. We start shooting for Anjan in March, and yeah, I'm very excited about it. It's only one of my first supernatural films that I did. Hi. I think it's amazing क्योंकि अभी web is a platform जहाँ पे you get there's so much of content, and a platform like this recognizes that kind of talent and just awards them, rewards them, which is so special. I won one. I already did, yes. Yeah, I'm nominated for Best Supporting category in Viewer's Choice, and yes, yeah. Yes, a couple of my web shows are coming, Your Honor, and 2 for Vote. Your Honor is for Applause, and these are 2 shows I'm really excited about. Thank you so much.